Good morning students, welcome back. So today in this video we will discuss parts of cell. We are discussing grade 9, the fundamental unit of life. Till now we have studied cell definition, cell theory, cell discovery, shape and size. Now in part 2 we will discuss structure of a cell. Component of a cell. The cell consists of three main parts, that is plasma membrane, cytoplasm and third most important, nucleus. The first part of the cell is cell membrane or plasma membrane. So student, let's understand it with the help of an example. Let's take example of a balloon filled with water. Now let's imagine that if we touch any object with the balloon or we pour something on the balloon, is there any changes we can observe? No, there will be no changes or effect on the balloon because balloon form an outer covering outside it like a cell membrane. Balloon also hold water inside it like the cell membrane hold the content of the cell. So I hope you must have understood that how much membrane is important to provide shape to the balloon. Similarly, cell membrane is very important to provide shape to the cell. So students, whenever you want to study cell membrane, always imagine a balloon. आपको कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी हो तो हमेशा इमेजिन कीजिए एक बैलून so that you can easily recall the characteristic of cell membrane. So now let's see all the characteristic of plasma membrane one more time. First, it is a outermost covering of the cell. Second, it is thin, flexible and elastic membrane. Third, it is a living membrane. Fourth, it holds the content of the cell. Fifth, it provides shape to the cell. Sixth, it composed of protein and lipids. Seventh, it is selectively permeable. Selectively permeable means it allows some substance to enter in and out. मतलब कि वो कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करते हैं कि वो अंदर आ सके और बाहर जा सके. सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन एनगल्फिंग द फूड from its surrounding. Engulfing means taking something inside the cell, as you all can see on your screen. So just now we have studied that cell membrane is selectively permeable. So question arises, how do movement of molecule, water, ions take place in cell membrane? To understand it, we will study movement of cell membrane that take place by two processes. First is diffusion, second is osmosis. Diffusion. Diffusion means the spontaneous movement of molecule or ions from higher concentration to lower concentration. Let's understand the diffusion with the help of this example. Take a glass, pour some water in it. Now add 1-2 drop of color in it. Now leave the apparatus for some time undisturbed. What do we observe? We will observe after some time that color get mixed in all water. And why does it happen? Because molecules has a tendency to move from higher concentration to lower concentration, where water is in more quantity while color is in less quantity. The water moves from higher concentration to lower concentration. Now students, see this video to understand diffusion more clearly.
So students, now I hope it is clear to you all. Now if we will see around us, there are three types of states present, that is solid, liquid and gases. So rate of diffusion is higher in gases than liquid and solid. Why it is so? Because in gases molecules are loosely bound and they have a low force of attraction. Secondly, due to cellular activities, CO2 production take place. Cellular activity means that cell keep performing some kind of activity. So it means CO2 concentration is higher inside the body whereas lower outside the body. As we have studied just now that in diffusion molecules move from higher concentration to lower concentration. Now we will study next process, that is osmosis. But before starting osmosis, I would like you all to know solute, solvent and solution. So solute, those material which get mixed in solvent, whereas solvent is that material which mixes solute. When solute and solvent mixes together, it forms solution. Let's understand it with the help of this example. Take a glass, fill it with water. Now add salt in it. Thus, we can say that solute is salt, water is solvent. Salt and water together form solution. So in osmosis we will study three types of solution. First is hypertonic, second is hypotonic, third is isotonic. As its name indicate, hypertonic, hyper means जिसमें ज़्यादा हो. So hypertonic solutions are those solutions in which solute concentration is more than solvent. Whereas hypertonic solutions are those solutions in which solvent is more than solute. Isotonic solutions are those solutions in which solute and solvent both are in stable condition or equal. So students, now we will understand osmosis with the help of this experiment. Take 2 glass or bowl, fill it with water. Now add sugar in 1 glass or bowl. Now add some raisin in it. Raisin means kishmish. Leave the apparatus for some time. What do we observe? After some time, we will observe that solution in which normal water is there, in that raisin gets swells up, whereas raisin gets shrink in sugar solution. Why does it happen? It happens because osmosis show movement of water from higher concentration to lower concentration, and cell has a tendency to absorb water. So when water is more than raisin, then it start getting inside the cell and raisin get swells up. While in another condition, raisin gets shrink because water start coming outside the cell, as concentration of water outside the cell is lower than the concentration of raisin. So when water go inside the cell, it is known as endoosmosis, whereas when water come outside the cell, it is known as exoosmosis. So students, अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो तरीके के मूवमेंट शो करती है, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूज़न वो प्रोसेस होता है जो कि आयंस मॉलिक्यूल्स में टेक प्लेस करता है. ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जो सिर्फ वाटर में टेक प्लेस करता है. ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा रेजिन एंड वाटर का. अगर डिफ्यूज़न के प्रोसेस में
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे वाटर में इंक कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गई। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज द नेम सजेस्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब ट्रांसमिशन होता है मटेरियल का, एट दैट टाइम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वेयर एज पैसिव मतलब जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो ड्यूरिंग डिफ्यूज़न there is no requirement of energy. So passive transport वो ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, whereas active transport वो ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। So students, now you can see in the given chart types of movement, that is passive, active and endocytosis. Osmosis is defined as the movement of water from higher water concentration to lower water concentration through a semi-permeable membrane. So let's say we have this container which is partitioned by this semi-permeable membrane. Now we add sugar solutions at both these sides. However, the concentration of each is different. Here we add concentrated sugar solution, while here dilute sugar solution. That means the concentration of water in this solution is obviously more compared to this. So after some time, we see water molecules moving from this side of the partition to this side. And how long will this movement take place? It will occur till the concentration of water is balanced. That is, equalized on both the sides. This is nothing but osmosis. So now student, we will study cell wall. But before that, I would like you all to know that on the basis of function and structure, cell are of two types. One is plant cell and another is animal cell. Now see plant cell. What you can observe in the diagram, that there are two bounded membrane present in plant cell. One is cell wall and another is plasma membrane or cell membrane. So in plant cell, cell wall is the outermost membrane. Now student, let's understand cell wall with the help of its characteristic and function. First point, it is the outermost membrane present in plant cell. Second point, it is dead, so it's provide rigidity to the cell. Third point, it is freely permeable. Freely permeable means it allow all the particles or molecules to enter in and out of the cell. वो किसी भी particle या molecule को अंदर और बाहर आने से रोकती नहीं है. It is hard, thus provide definite shape to the cell. It provides protection to the cell. It is composed of cellulose. It provides turgidity to the cell. Turgidity means when water start coming inside the cell, cell gets swells and there is a higher chances of bursting it. So to avoid it and cell can bear that pressure, we call it turgidity. तो स्टूडेंट, जब सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो सेल स्वेल अप हो जाता है और उसकी बर्स्ट होने की चांसेस जो होते हैं सेल के बर्स्ट करने की बढ़ जाती हैं. तो उसे रोकने के लिए जो कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है उसे हम बोलते हैं टर्जिडिटी. सो स्टूडेंट, अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. सो नाउ लेट्स कंपेयर इट. अभी हमने पढ़ा कि सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, वेयर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. सेल वॉल जो होती है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल की, वेयर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल. सेल वॉल डेड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है. सेल वॉल रिजिड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक होती है. सेल वॉल फ्रीली परमेएबल होती है, मतलब वो किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने और बाहर जाने में रोकती नहीं है.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब वो कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आ सके और सेल से बाहर जा सके। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेल वॉल प्लांट को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से मटेरियल आएगा और मटेरियल जाएगा सेल में से। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक तरीके का एक्यूज ग्राउंड सब्सटेंस या फिर हम बोल सकते हैं एक तरीके का फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइटोप्लाज्म। First, it is present in between nucleus and plasma membrane. Second, cytosol is an aqueous ground substance of cytoplasm. Third, cell organelles are present in cytosol. So now student, we will discuss the most important part of the cell, that is nucleus. न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि वो सारे फंक्शंस को सेल के कंट्रोल करते हैं। So student, now see the giving diagram. We will cover each part of the nucleus step by step. Nucleus is mainly divided into two parts. Nucleus दो main parts में divide होता है. First is nuclear envelope, second is nucleoplasm. Nuclear envelope is a double bonded membrane present around the nucleus. मतलब न्यूक्लियर एनवेलप एक डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट रहती है, एज यू कैन सी इन द गिविंग डायग्राम। न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। स्मॉल गैप्स और पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स आर प्रेजेंट इन nuclear envelope, as you can see on the diagram. Nucleopores allow transmit of material between the cytoplasm and nucleoplasm. ये न्यूक्लियोपोर अलाउ करते हैं कि मटेरियल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में easily transmit कर सकें। Friends, now we will see which material are present in nucleoplasm. Nucleoplasm consists of nucleolus and chromatin material. Nucleolus are one or more in number. As we know, cell perform so many functions inside our body. Thus, it required protein, and protein is made by ribosomes. जैसे हमें पता है कि सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसे क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है, और वो प्रोटीन उसे कहाँ से मिलता है? राइबोसोम से। नेक्स्ट पार्ट इज क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल इज अ एंटेंक्ल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी इन द गिविंग फिगर। मीन्स क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो गुच्छे की तरीके से इकट्ठा स्ट्रक्चर होता है। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म क्रोमोसोम। मतलब सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो एक बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर में इकट्ठे हो जाते हैं और क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। नाउ स्टूडेंट, यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम किसे बोलते हैं। सो क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी इन योर फिगर। क्रोमोसोम क्या होते हैं? थ्रेड की तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी एक डेफिनेट शेप होती है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो बने हुए होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए जो है वो कंसिस्ट होता है जीन से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में। मतलब कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टेक प्लेस थ्रू जीन्स, and genes are present in DNA.
So student, this is all for today's session. Thank you, and please don't forget to share, like and subscribe my page for more updates.